बेसिकली इसमें हमने साउंड की जो स्पीड है इन एयर वो हमने फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको साउंड से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स आने चाहिए। इंट्रोडक्शन आपको साउंड का पहले पता हो। सो फर्स्ट थिंग अबाउट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म होती है एंड इट इज अ मैकेनिकल वेव। इट is a mechanical wave. Means they needs medium for their propagation. Means they need medium for their propagation. And in mechanical wave, it is a longitudinal wave. It is a longitudinal. It is a longitudinal wave. Longitudinal wave mean they propagate in form of compression and rarefaction. Now, examples of sound waves are, in examples, we have, first one is audible sound. Audible sound, जो हम सुन सकते हैं humans, the sound whose frequency is in the range between 20 hertz to 20,000 hertz. वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, जो ह्यूमंस जो हैं वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज, सेकंड इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, द साउंड whose frequency is greater than 20,000 hertz or 20 kilohertz and it is inaudible. Next, because our ear membrane cannot vibrate with such high frequency. Next is infrasonics या infrasound भी कह सकते हैं। Infrasonic, the sound whose frequency is less than 20 hertz is called infrasonic. Okay, and this is very low frequency and our ear cannot detect the loudness of this type of sound. Next is, one thing is supersonic. Supersonic is, it is a body moving with greater than the speed of sound. It is a body moving with greater than the speed of sound. Moving with greater than the speed of sound. So it is not a type of sound. It is not a type of sound. So this is just small introduction about sound and their types. First one is audible sound, ultrasound, infrasonic, and next is supersonic. Supersonic is the body moving with greater than the speed of light. जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, उस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। So it means supersonic, it is not a type of sound.
नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड है उसको कैसे कैलकुलेट किया गया और किन किन साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया और क्या एरर बीच में आ रहे थे वो अब हमने इसमें डिस्कस करना। सो द हेडिंग इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, in air at 0 degree Celsius. What will be the speed of sound in air at 0 degree centigrade? अब इसको सबसे पहले जो कैलकुलेट किया गया वो किसने कैलकुलेट किया? न्यूटन ने। तो हमारी हेडिंग बन जाएगी न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन फॉर्मूला for speed of sound, speed of sound in air। ये सबसे पहले जो कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ साउंड को वो न्यूटन ने किया। और इसमें कुछ एरर होंगे वो हमने देखने हैं, क्यों एरर है, क्या रीजंस हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करना। तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वी नो दैट, इसको हम जस्ट पॉइंट्स में लिख लेते हैं एज द साउंड waves are longitudinal waves which requires medium for their propagation, which requires material medium for their propagation। फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है। And in the first lecture we have done that the speed of longitudinal wave is given by the speed of longitudinal wave is given as v is equals to square root e over rho, where फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था E इज द इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस, जबकि रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया फॉर साउंड, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, during compression, because longitudinal waves propagate in form of compression and rarefaction, so he assumed that during compression during compression during compression temperature will rise, temperature
will rise, and during rarefaction and during rarefaction temperature will falls, temperature will fall, कम हो जाएगा। इसने क्या एज्यूम किया कि कंप्रेशन के वक्त टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और रेयर फ्रैक्शन के वक्त टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर विल राइज ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड टेम्परेचर विल फॉल्स ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन। नाउ thus he concluded that the rise in temperature, this rise in temperature, rise in temperature will be equals to the fall in temperature। कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ उतना ही टेम्परेचर रेयर फंक्शन के दौरान कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो टेम्परेचर remains constant when sound move, so temperature remains constant, and we know that the process in which temperature is constant and such process in which temperature is constant, और वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है is called isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज वैलिड। तो बॉयल्स लॉ जो आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ वैलिड होगा। लेट करते हैं, लेट P is the initial pressure, let P is the initial pressure and V is the initial volume। हम शुरू में अज्यूम करते हैं कि जैसे एक रूम है उसमें शुरू में प्रेशर कितना है, P है, और वॉल्यूम जो एयर का है वो हम अज्यूम करते हैं V। That P is the initial pressure in certain room and V is the initial volume. Then by Boyle's law we have, then by Boyle's law we have, और Boyle's law क्या होता है बच्चे कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये नंबर 2 कह देते हैं। हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अभी हमने शुरू में इनिशियल कंडीशन ली है कि एक रूम ले लेते हैं, उसमें इनिशियल प्रेशर है P एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज V। नाउ जैसे ही आप उस रूम में बोलते हैं, जैसे आपका रूम है उसमें आप इनिशियली प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V, एयर मॉलिक्यूल्स का अज्यूम करें, और जैसे ही आप बोलेंगे नाउ यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जैसे हम बोल रहे हैं व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड
pressure is increased from, मतलब पहले प्रेशर कितना था, P था, अब उससे हमने बढ़ा के कितना कर दिया है, P प्लस डेल्टा P कर दिया है। पहले प्रेशर था P, और जैसे ही हम बोल रहे हैं ना, तो हम वी आर exerting the pressure on the molecules, air molecules, so their pressure will be increased, then volume will decreased, then volume will decrease. Due to this increase in the pressure, volume will decrease from, पहले वॉल्यूम था V बचे इनिशियल, अब वॉल्यूम V से कम होके V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। नाउ अगेन Boyle's law become, then Boyle's law become, Boyle's law become, पहले बचे प्रेशर था P, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P। तो अब देखें बॉयल्स लॉ बनेगा, पहले था बचे प्रेशर P, अब हो गया P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम जिसकी वजह से उतना ही कम हो जाएगा ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। आपको याद होना चाहिए जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। इसलिए हमने P प्लस डेल्टा P किया है एंड V माइनस डेल्टा V किया है। अब अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 in equation 2, so we have, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं। नाउ PV इज इक्वल्स टू P plus delta P, on this side we have V minus delta V. This is we are just putting the value of equation 3 in equation 2. We have this relation PV is equals to P plus delta P, V minus delta V. Now just open the brackets, so we have PV, and when you multiply P with this V, so it becomes PV, and when you multiply this V with the second term, this will become P delta V with negative sign। and now अगर हम डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव प्लस डेल्टा P, एंड देन वी हैव प्लस माइनस माइनस डेल्टा P into delta V। we are just open the brackets and multiply the quantities। now अब जो चीज कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। here it is PV, this PV will be cancelled with this one। now we have left on this side is 0 minus P delta V plus delta P minus delta P delta V, as delta P and delta V is very small, is very small, so their product is become negligible, so their product is become negligible। मतलब डेल्टा P और डेल्टा V इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। तो हम इस क्वांटिटी को निग्लेक्ट कर देंगे। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, मैं अगेन लिख देता हूँ, 0 इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P माइनस
डेल्टा पी डेल्टा वी, हमने क्या किया है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया। अब डेल्टा पी भी स्मॉल है, डेल्टा वी भी स्मॉल है। जब दो स्मॉल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर और भी स्मॉल हो जाता है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 1/2 विद 1/2, यू गेट 1/4 विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। इसीलिए हम इसको, इसके ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से हमारी इक्वेशन में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी आर निगलेक्टिंग दिस टर्म। नाउ अब हम इस वाली टर्म को, नेगेटिव वाली टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो वी हैव P delta V, on this side we have delta P. Again P is equals to delta P over delta V, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और बचे डेल्टा P का मतलब होता है स्ट्रेस, मतलब चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड यहाँ पे हमने एक टर्म नहीं लिखी है। Here delta P is multiplying with V, so we have V here. यहाँ पे एक टर्म हमारी मिसिंग है, तो वो हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे V आएगा, माइनस साइड एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी आपने V को पुट करना है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो V एज इट इज़, V एज इट इज़। अब हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस फर्स्ट टर्म को उठा के नीचे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा V डिवाइड बाय V। इसको भी हम बाद में लिख। तो बेसिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा P इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। एंड द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो इसकी रेशियो होती है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इट मींस P pressure is equals to E हो गया, where E is the elastic modulus at constant pressure, sorry, temperature. Now we are substituting this value, put this value in equation number 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये वाली, दिस वन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सो वी हैव आवर फर्स्ट इक्वेशन इज, अगेन मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन implies that V is equals to अंडर रूट E over rho। V is equals to अंडर रूट E over rho। तो अब हमने E की जगह पे क्या लगा देना है, नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी, E की जगह पे हमने P पुट कर देना है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स V is equals to अंडर रूट P over rho, where P is the atmospheric pressure, where P is what? P is the atmospheric pressure. P is the atmospheric pressure. And अगर हम इस प्रेशर की वैल्यू पुट कर दें, एंड इट्स वैल्यू इज P is equals to rho GH। क्लास 9 चैप्टर 7 में यह फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। P is equals to rho GH। In this case the rho is the density of mercury। यहाँ पे हम लिख देते हैं rho prime, लिख देते हैं
रो प्राइम इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। तो हमारे पास अगर इनकी हम ये वाली वैल्यू को हम अगर ऊपर पुट कर दें इस जगह पे, सो वी हैव अ रिलेशन विच इज अंडर रूट रो प्राइम जी एच एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव रो। अब जरा आप वैल्यूज चेक कर लें। रो प्राइम इज व्हाट? द डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी of mercury, which is equals to 13.6 grams per centimeter cube, and G is the 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम सेंटीमीटर्स में ये टर्म्स ले रहे हैं। आप इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, इन टर्म ऑफ केजी ले लें, वो आपकी मर्जी है। H is the height of mercury column. H is the height of mercury column, which is 76 सेंटीमीटर होती है। अगर आपको बैरोमीटर में याद है तो द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम at normal atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg. Next, rho is the simple rho is the density of air. Density of air is 0.0001293 grams per centimeter cube. Now put above, so the above equation become V is equals to square root, we have 13.6 multiply with 981 which is 9.8 हम लेते हैं centimeter, become 981. H is 76. All the values are in centimeters. So next is in denominator we have 0.001293. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 2828003 आएगा। The centimeter per second, this one is in centimeter per second. Now in term of meter per second it becomes 280, almost 280 meter per second. This velocity is has 16% less than the experimental value, but the experimental value हम लिखते हैं according to Newton, this is the speed of sound in air at 0 degree centigrade. This is according to Newton, but the experimental value, but the experimental value of speed of sound in air at 0 Celsius is 332 meter per second. 332 meter per second, whereas न्यूटन का आंसर उससे 280 आ रहा है, but the experimental results are 332. So it means there is 16% error. So there is 16% error due to the wrong assumption made by the Newton. 16% error है because there is a difference of, आपके पास difference आएगा 30, 40, almost 53 or 52, almost 53 और 52 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, so there is a difference of error is 53 है, and in percentage there is 16% error. So this error was corrected by French scientist. This was corrected by French scientist French scientist with French scientist Laplace, and it is known as Laplace correction. You can also say that this